Assalamu alaikum, dear students of class 11th. I am Mohammad Abdullah, Bhat, lecturer physics, Boys High Secondary School, Kupwara. So today we are going to discuss law of conservation of mechanical energy. In the previous lecture, we have discussed conservative and non-conservative forces. So what is law of conservation of energy? That energy can neither be created nor destroyed, but can be transformed from one form to another form, right? But here we are concerned with the conservation of mechanical energy. So what is law of conservation of mechanical energy? Law of conservation of mechanical energy. It states that mechanical energy, that is kinetic energy plus potential energy of a system under conservative forces remains constant, right? So this is similar. The energy of a system remains constant. It can neither change nor destroy. Energy can be neither destroyed nor created, but can be transformed from one form to another form. So here we are discussing only the mechanical energy. That means kinetic energy gets converted into the potential energy, or energy gets converted into the kinetic energy, and total energy of the system remains constant if the body is under the action of a conservative force. So there are only two conservative forces. One force is gravitational force and another force is electrostatic force. So we will prove this law under the action of gravitational force. So you must remember here, mechanical energy of a system is not conserved if non-conservative force acts on it. Non-conservative force acts on it. So non-conservative is path dependent, but conservative force is not path dependent. That only depends upon the initial and final position. For example, we can say a body falling towards the earth, right, in air, is not conserved. As both conservative force
that is gravitational force and non-conservative force. Non-conservative force, that is resistance of air. Acts on it, right? So here two forces act. One is gravitational, which is conservative, but at the same time there is non-conservative force, which is the resistance of the air acting on it. So here we can say the mechanical energy does not remain constant. So we have to consider a system. So we have considered a system. We have to consider a system in which the mechanical energy remains constant. That is, kinetic energy gets converted into the potential energy, or potential energy gets converted into the kinetic energy, right? So for this, let us consider a free fall of a body, where we can prove easily the law of conservation of mechanical energy. So consider a free fall of a body. Free fall of a body. Free fall, is about free fall is a body which is falling towards the earth with an acceleration equal to the acceleration due to gravity. That means in this system there must not be non-conservative force. So this fall is possible through the vacuum, right? So consider the free fall of a body, where mass of body is equal to m. Mass of the body is equal to m, which is whose initial velocity is equal to u, which is equal to 0. That means body is at a rest, right? Where it is at a height of the body is equal to h. That means the body is at a height of h meters above the ground, but is at rest. So its initial velocity is equal to 0. Its initial velocity is equal to 0. So what is the mass of the body? It is m. What is initial velocity? That is u, which is equal to 0. That means the body is at rest. So it is at a height of h meters from the surface of the earth. So let us consider the body at A, which is at a height of h meters from the surface of the earth. Here the velocity of the body, that is u, is equal to 0. That means the body is at rest, right? So let us consider the three positions. One is initial position A, second position is B, and third position is C. When the body is at A, the height is equal to h meters, but the body is at rest. So its kinetic energy will be 0, because kinetic energy is 1/2 of mu square. So u is equal to 0, so its kinetic energy will be 0. And it is at a height of h meters, so its potential energy is equal to mgh, right? This is kinetic energy, this is potential energy. So total energy will be the sum of the two. Now when the body is allowed to fall, and at any time it reaches the point B, it covers a distance of x, and its height from the surface of the earth remains h minus x. So at this position we have to find both the energies, kinetic energy as well as potential energy. So potential energy अगर हम देख लेंगे तो इसकी potential energy होगी, B पे मैं बात कर रहा हूँ, potential energy होगी किसके बराबर, m g और h यहाँ पे रह जाता है h minus x. तो ये पोटेंशियल एनर्जी हुई. तो अब हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर. लेकिन यहाँ पे कितनी वेलोसिटी इसकी होगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, राइट.
इसी तरह से यहाँ पे भी हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे, पोटेंशियल भी कर लेंगे और काइनेटिक एनर्जी भी कर लेंगे। तो हम स्टेप वाइज ये काम कर लेंगे। सो फर्स्ट वी विल टेक द पोजीशन ए, राइट। सो एट ए, potential energy of the body is equal to, this is mgh. G is acceleration due to gravity, m is the mass of the body, and h is the height. And its kinetic energy is equal to, it is 1/2 of mu square is equal to 1/2 of m into 0 square, which is equal to 0. So we can write here total energy is equal to, total energy is equal to kinetic energy प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू, दोनों को देख लेंगे, ये 0 है, ये mgh है, सो दैट विल बी टोटल mgh. सो एट पॉइंट ए द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इट इज पोटेंशियल एनर्जी एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0, राइट. तो अब हम बी पे आते हैं, दैट इज एट पोजीशन बी, व्हेन द बॉडी फॉल्स एंड इट फॉल्स फ्रीली विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो एट बी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg, तो ठीक है, हाइट कितनी रही अब h माइनस एक्स, तो यहाँ पे डाल देंगे h माइनस एक्स, सो विच गिव्स mgh माइनस mgx, mgh माइनस mgx, ये का पोटेंशियल एनर्जी है. अब हमें चाहिए पहले इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी. सो वी कैन राइट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस as, that you know this is equation of motion, third equation of motion. So v हमें चाहिए v square minus ये 0 square because the body falls at rest, from the rest, body falls from the rest and is equal to twice, as it follows with the acceleration due to gravity, तो हम यहाँ पे g लिख सकते हैं, और कितनी डिस्टेंस इसने कवर किया, that is equal to x. So here it is v square is equal to twice gx, right. अब हम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर के बदले में डाल देंगे वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर के बदले में डाल देंगे हम ट्वाइस जी एक्स, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बिकम जी एक्स, एम जी एक्स, एम जी एक्स. सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है हमारी mgx, प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है mgh माइनस mgx, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, राइट. सो टोटल एनर्जी इज अगेन इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन यहाँ पे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है. व्हाट, where goes the potential energy, where from comes the kinetic energy. So in this case, when the body falls, its potential energy decreases but its kinetic energy increases, and the sum of the two energies is equal to the total energy. तो दूसरे केस में भी हमारी एनर्जी बन जाती है mgh. इसके बाद हम सी पोजीशन पे आते हैं, दैट इज लॉस्ट पोजीशन, दैट इज एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, राइट. सो एट सी, at C, we can write here potential energy is equal to, when the body reaches to point C, H is equal to 0. So you will write here potential energy is equal to mg into 0, that is equal to 0. So potential energy becomes 0. Now again we have to find the kinetic energy. So kinetic energy is equal to 1/2 of mv square, right. But what is the velocity of the body with which it hits the ground? अब तीसरी इक्वेशन का यूज कर लेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस as, v स्क्वायर ठीक है माइनस ये 0 स्क्वायर है बिकॉज इट फॉलोज फ्रॉम द रेस्ट, इज इक्वल टू ट्वाइस g, और यहाँ पे हम h डाल देंगे क्योंकि अब बॉडी कितनी फॉल हुई है, थ्रू ए हाइट ऑफ h. So we can write here it is v square is equal to twice gh. Now kinetic energy is equal to 1/2 of m, v square के बदले में हम डाल देंगे twice gh,
ट्वाइस जी एच, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज इक्वल टू एम जी एच, एम जी एच. Now, what is total energy? So total energy is equal to kinetic energy plus potential energy, which is equal to काइनेटिक के बदले में हम डाल देंगे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, एम जी एच प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू 0, सो विच इज इक्वल टू एम जी एच. टोटल एनर्जी इज इक्वल. तो एक केस हमारा ये है थर्ड, एक केस हमारा है, ये वाला हमारा फर्स्ट केस है, और ये वाला हमारा सेकंड केस है. तो जब आप तीनों पोजीशंस पे देख लेंगे एम जी एच एम जी एच एम जी एच, सो द टोटल energy of the system under the action of the conservative force remains constant. So when the body is at the highest point, it has potential energy but no kinetic energy. But it is at position B, it has both kinetic energy and potential energy. And total sum of the two energies is equal to mgh. इसी तरह से हम C की बात करेंगे. यहाँ पे तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है व्हेन इट जस्ट रीचेस द ग्राउंड, इसकी काइनेटिक एनर्जी है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इसकी 0 है, लेकिन टोटल एनर्जी फिर भी बन जाती है mgh. सो हियर पोटेंशियल एनर्जी व्हेन बॉडी फॉल्स, पोटेंशियल एनर्जी gets converted into the kinetic energy and the total energy remains constant. So आप ये पॉइंट लिख के रखिए, नोट करके रखिए. in the free fall potential energy is converted into kinetic energy of a body and total energy remains constant. This is conservation of mechanical energy. Similarly, we can prove if a body is raised from the ground to a height, at the ground again potential energy is equal to 0. फ्रॉम रेस्ट हम इसको लिफ्ट कर लेंगे, तो इस तरीके से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं. सो द वेरिएशन ऑफ द एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायग्राम. आप यहाँ पे देख लीजिए, ये एनर्जी है, तो अलोंग वाई एक्सिस हमने एनर्जी को प्लॉट किया है और अलोंग एक्स एक्सिस हमने हाइट ऑफ द बॉडी को प्लॉट किया है. When the body is at a height of h meters from the surface of the earth, so its potential energy is maximum. तो ये dotted line जो आपकी दिख रही है, this is potential energy, so its potential energy is maximum, right? अब जब ये फॉल हो जाती है तो हाइट डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? हाइट डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएगी. जब हाइट डिक्रीज हो जाएगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी. एंड व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड इट इज पोटेंशियल एनर्जी बिकम 0, जो आपने प्रूव भी किया है. बट एट द सेम टाइम व्हेन एच डिक्रीजेस इट इज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस एंड दिस काइनेटिक एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम एट द पोजीशन व्हेन इट जस्ट रीचेस द ग्राउंड. तो जब का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज हो जाती है, राइट? इसी तरह से जब हम देख लेंगे एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इनका सम टोटल एनर्जी के बराबर होगा, दैट इज कांस्टेंट एट एवरी पोजीशन. यहाँ इसकी हाफ काइनेटिक हाफ पोटेंशियल होगी, हाफ काइनेटिक
half potential disposal at the point of intersection and the total energy remains constant. इसीलिए हम यहाँ पे straight line graph रख लेते हैं. So this is total energy of the system. Again, when H decreases, potential energy decreases, but at the same time kinetic energy increases. At the point of intersection, the energies will be equal, and a half potential, half kinetic, right? So at every instant, total energy of the system remains constant, right, and is equal to mgh that you have proved. So this was the law which is known as law of conservation of mechanical energy. In the next lecture, we will discuss mass energy equivalence of a body, right? Okay, thank you.